Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are doing well. Well, dear friends, as we are reading about the administration and consolidation of the Delhi Sultanate, and in the previous video class we have discussed it. Today we will continue with it. Uh, Dear friends, one important point to remember is that the large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. Even in the Gangetic Plain, there were forested areas that Sultanate forces could not penetrate. Uh, Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short duration. Dear friends, here's a note about the chieftains and their fortifications. Uh, it's narrated by Ibn Battuta, a 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes fortified themselves in mountains, in rocky, uneven, and rugged places, as well as in bamboo groves. In India, the bamboo is not hollow, it's big. Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them, and they are on the whole very strong. The chieftains live in these forests which serve them as ramparts, inside which are their cattle and their crops. There's also water for them within that this rain water, that is rainwater, which affects which collects there. Hence, they cannot be subdued except by powerful armies who, entering these forests, cut down the bamboos with specially prepared instruments. Now, this is what Ibn Battuta says about the fortifications of these chieftains which challenged the Sultanate from time to time. Dear friends, Mongols under Genghis Khan had invaded Transylvania in northeastern Iran in 1219, and the Delhi Sultanate forced their onslaught soon after. Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khalji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule. मंगोलों ने जब वस्ती एशिया के इलाकों ईरान वगैरह पर हमला किया 1219 में, तो उसी के साथ दिल्ली सल्तनत जो थी वो मजबूर हो गई कि उनको भी ये उनका ऑनस्लॉट जो है, उनका हमला जो है, उनके खतरात से निपटना पड़ा, मंगोल्स के खतरात से। तो इसके लिए मंगोलों के जो हमले थे वो बढ़ गए थे अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में। तो सल्तनत मजबूर हो गई कि इनको एक बहुत बड़ा फोर्स, एक बहुत बड़ी फौज इनको तैयार रखनी पड़ी मंगोलों के मुकाबले के लिए। दिस फोर्स द टू रूलर्स, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी and this Iltutmish to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। तो ये जब इनको बड़ी फौज रखनी पड़ी तो इसके लिए एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी पैदा हो गया। लेट्स सी हाउ द टू सुल्तान्स डेल्ट विद दिस। नाउ देयर इज अ टेबल, वी कैन सी हाउ द टू सुल्तान्स, that is Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq, dealt with the challenge posed by the Mongols, as a result of which they have to keep ready a big standing army.
First of all, we will have a look on the Alauddin Khilji's reign. What Alauddin Khilji did, what steps did he took. तो क्या उसने क्या क्या did he take, the steps he take. अच्छा, ये हम देख रहे हैं पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में. दिल्ली was attacked twice in 1299 और 1300, 1299 और 1300 ईस्वी. इन इसके अरसे के दरमियान में एक अटैक किया दिल्ली पे किया गया, और दूसरा अटैक 1302 से 1303, 1302 to 1303. तो ये दो हमले हो गए दिल्ली पे. एज ए डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, जिसके नतीजे में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी तश्कील दे दी. नंबर 2, अलाउद्दीन constructed a new garrison town named Siri for his soldiers. Number 3, the soldiers had to be fed. This was done through the produce collected as tax from lands between the Ganga and Yamuna. Tax was fixed at 50% of the peasants' yield. Next, the soldiers had to be paid. Alauddin chose to pay his soldiers' salaries in cash rather than iqtas. The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi, and it was thus feared that merchants would raise their prices. To stop this, Alauddin controlled the prices of goods in Delhi. Prices were carefully surveyed by officers, and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. Then the next point, Alauddin Khilji, Alauddin's administration, his administrative measures were quite successful, and chroniclers praised his reign for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasions. So this is about the steps taken by the Alauddin Khilji to face the challenge of Mongols. Now let's have a look as to what steps did Muhammad Tughlaq take. तो मोहम्मद तुगलक जो है उसने क्या क्या किया. नंबर 1, the Sultanate was attacked in the early years of Muhammad Tughlaq's reign. The Mongol army was defeated. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transoxiana. He therefore raised a large standing army. तो उसका इरादा था कि मैं अब मंगोलों पर यहाँ से ही हमला करूँगा, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी फौज बनाई उसने. Rather than constructing a new garrison town, the oldest of the four cities of Delhi, that is Delhi Akuna, was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of Dawlatabad in the south. तो इसके लिए ये किया उसने, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली कोहना को फौज के लिए खाली किया, वहाँ फौज के गैरिजन वहाँ रख दिए, और वहाँ की जो आबादी थी उनको मुंतकिल किया दौलताबाद में. तो जो तीसरा पॉइंट है, दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग such a large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. This coincided with famine in the area. अब इसने और टैक्सेस लगाए ये एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए, लेकिन उसी ज़माने में वहाँ कहत भी पड़ गया, तो ये एक बदकिस्मती हो गई उसके लिए. Muhammad Tughlaq also paid his soldiers cash salaries, but instead of controlling prices, he used a token currency, somewhat like present day paper currency, but made out of cheap metals, not gold and silver.
People in the 14th century did not trust these coins. They were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with this token currency. This cheap currency could also be counterfeited easily. तो इसने एक जो टोकन करेंसी बनाई थी वो किसी मेटल की बनाई थी उसने, गोल्ड और सिल्वर के अलावा। तो लोग उन्हें उसी जो टोकन करेंसी थी उसी में टैक्सेस पे किए और गोल्ड और सिल्वर जो था उसको अपने पास प्रिजर्व किया। तो इस तरह से ये काउंटरफीट जो है प्रूव हो गया सल्तनत के लिए, इससे नुकसान हो गया सल्तनत को। तो वो जो करेंसी इसने बनाई थी टोकन करेंसी, उसकी नकल भी की जा सकती थी क्योंकि वो तो एक चीप मेटल में बनाई जाती थी। तो इस तरह से वो सल्तनत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया उससे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वायर अ फेलियर। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर was a disaster. He then gave up his plans to invade Transoxiana and disbanded his large army. Meanwhile, his administrative measures created complications. The shifting of people to Dawlatabad was resented. The raising of taxes and famine in the Ganga Yamuna belt led to widespread rebellion. एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड। तो ये इसके जो फेलियर्स थे इसमें से ये सब पॉइंट्स थे कि एक तो उसने जो कश्मीर के लिए जो उसने फौजी मुहिम भेजी थी तो वो फेल हो गई, वो डिसास्टर प्रूव हो गया उसके लिए। तो इसके बाद उसने ट्रांसोशियाना पर अपना जो हमला बनाया था, प्लान हमला करने का, वो उसने बदल दिया वो इरादा और अपनी जो बहुत बड़ी आर्मी थी उसकी तो उसको डिसबैंड किया। तो इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उसने लिए थे तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई, मुश्किलात पैदा हो गई। जो लोगों को शिफ्ट किया था दौलताबाद तो लोगों ने उसके लिए जो है रिजेंटमेंट दिखाई, लोगों ने उससे इनकार किया, तो वो लोग उसे खुश नहीं थे। तो तीसरी बात जो उसने वो टैक्सेस जो उसने बढ़ा दिए थे उधर से तहत साली भी पड़ गई। तो इस वजह से जो गंगा यमुना बेल्ट में जो लोग थे वहाँ पे बगावत की उन्होंने इसके खिलाफ कि ये तो हम पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, बहुत बड़ा बोझ पड़ा है लोगों पर। लोगों ने उसके खिलाफ बगावत की तो उसके भी मुज़िर जो है बुरे असरात पड़े एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी फेलियर माना जाएगा मोहम्मद तुगलक का। और फाइनली उसकी जो टोकन करेंसी थी उसे भी सरकारी खजाने को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो उसको वो टोकन करेंसी जो थी फाइनली उसको वो कैंसिल करनी पड़ी, उसको रिकॉल करना पड़ा, वापस लेना पड़ा और दोबारा से वही करेंसी जो थी गोल्ड और सिल्वर की वही राइज करना पड़ी। तो ये कुछ फेलियर्स थे मोहम्मद तुगलक के। तो इन दिस लिस्ट मोहम्मद तुगलक्स failures we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. ये सब बहुत बड़ी बात है कि एक दिल्ली के सुल्तान ने मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए प्लान बनाया था। Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq's measures were conceived as a part of military offensive against the Mongols. So that was about the administrative system and the measures of Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. So today we conclude it here. Thank you very much. Take care and goodbye.